हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर क्यू क्लासेस। मु सत्य सर आपण पे नहीं आसी 15 इंपोर्टेंट प्रिपोजिशन प्रैक्टिस सेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर द स्टार्ट द क्लास, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलो स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी। कौन हम आंसर कहतु? ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी फ्रॉम या फिर ऑप्शन डी फॉर। कौन हम आंसर? यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी, राइट ऑप्शन टी हम ऑप्शन नंबर बी इनटू, इनटू अ कंट्रोवर्सी। ठीक अच्छे। देखो सांग मैंने प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हो बा स्कूल कैरियर हो आम इंग्लीश प्रिपोजिशन, इंग्लीश नाउन एसब विषय आम बेले बेले कन्फ्यूज हो जाऊे। तेणु आम चैनल आपने पाइपर प्रत्येक इंग्लीश प्रैक्टिस सेट एवं टॉपिक वाइज आपरे। तेणु आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और क्लासेस को रेगुलरली वाच करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश इज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कौन हम आंसर? ओवर ना फॉर ना टू ना ऑन। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश इज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 रा करेक्ट ऑप्शन है ऑन। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन इज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, he was heartbroken dash marries indifference to him। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर कौन है? at ना on ना over ना upon। he was heartbroken dash marries indifference to him। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है ऑप्शन नंबर सी over, over marries indifference to him। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु। कौन हम राइट आंसर? इन, इनटू, टू या अप टू। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु। देखो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 रा ए इन। ट्रांसलेट दिस पेज फ्रॉम इंग्लिश टू, सॉरी इन हेनी टू हम। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिस अकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट डैश द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कौन हम? अप टू, ऑन, टू ना फॉर। दिस अकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट डैश द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है देखो ऑप्शन सी टू। ठीक अच्छे, एडिक्वेट पाखे टू रहिबो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस। कौन हम? फॉर ना टू ना अगेंस्ट ना अबाउट। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कौन है? फॉर ना टू ना अगेंस्ट ना अबाउट। आई चैलेंज्ड हिम कौन हम? ऑप्शन बी हम। देखो तार आंसर टू। आई चैलेंज्ड हिम टू ए गेम ऑफ चेस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट विथ अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट विथ अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। कौन हम आंसर? ओवर ना अपन ना अगेंस्ट ना ऑन। कौन हम? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हम ऑप्शन नंबर सी अगेंस्ट। ठीक अच्छे, माने आउ जिकी रही लैम्प पोस्ट को अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट विथ अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट डैश अदर्स वर्क। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कौन हम? देखो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर है ऑप्शन बी विथ। ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स वर्क। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ। इन अ मंथ ना विथ अ मंथ ना आफ्टर अबाउट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर है इन। द कॉलेज टर्म विल एंड इन अ मंथ। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 चलतु, दे वांटेड एडवाइस डैश हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर कौन है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 रो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखो ऑन हो। दे वांटेड एडवाइस ऑन हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। राइट ना मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज ऑलरेडी ऑपोजिशन डैश द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कौन हम आंसर? देयर इज ऑलरेडी ऑपोजिशन डैश द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर कौन हो?
देखो 11 आंसर हम ऑप्शन नंबर सी कौन अच्छी टू द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट ना मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12 in an election those in power should feel obliged to compete dash their opponents on equal terms question number 12 what will be the answer को preposition लागिवो कोहंतु question number 12 रो compete देखो compete पाखरे with लागिवो ठीक अछि question number 13 question number 13 अछि the work on this project has been seriously set dash कोन हबो question number 13 answer on ना off ना about क्वेश्चन नंबर 13 रा आंसर है बी ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू कीप डैश दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू कीप डैश क्वेश्चन नंबर 14 आंसर कौन हम ऑफ ना टू ना आठ कोटा लगे चिंता करूँ आपण मैंने क्वेश्चन नंबर 14 दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू कीप कौन हो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हम अप कीप अप तापर क्वेश्चन नंबर 15 देखो कोल हैज बिकम डेयरर डैश द एंड ऑफ लास्ट ऑफ ईयर कौन हो आंसर क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सीन्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कौन हम सीन्स ओके फ्रेंड्स आज क्लास रे आम 15 इंपोर्टाट इंग्लिश प्रिपोजिशन प्रैक्टिस सेट कले नेक्स्ट क्लास मुझे आसबि आउ 15 इंपोर्टाट प्रैक्टिस सेट तो आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु अधिक शेयर कर दिंतु आउ इंग्लिश प्रैक्टिस आपण मैंने कर चलतु थैंक यू।